Good evening, everyone. Good afternoon. Okay. So, how are you all? Doing great. Doing great. Very nice. Fine. Very good. Okay, so we also welcome Jayashree and Maray. Welcome to eQool Guru. And today we are going to learn about agriculture. We have already been discussing about agriculture for the last many classes. And today we are going to finish this. So welcome. I hope you all enjoy this session. Okay, so welcome everyone. Should we start? Yes, sir. Okay. So again, let's have this 2-minute challenge. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. Good afternoon, Shantanu. Good afternoon, sir. Good afternoon, Shubham. Okay, so anyone would like to take the 2-minute challenge? Last class में क्या पढ़ा था हमने? कोई बता सकता है क्या? Sir, याद? may Okay, चलो बताओ शुभम. Sir, we started with horticultural crops, fruits and vegetable crops. We Okay. read about mangoes, Alfonso mango, etc., and the states, oranges, different types of fruits. We studied where it is produced. We also studied that India produces world's 13% of the world's vegetables. Then India also produces tropical as well as temperate fruits. Okay. Then we studied about rubber. We saw how rubber is extracted from the plant. Then we saw video also. Then cotton. Cotton, we also read how much temperature it requires. Then different states where it is produced. And the video we saw. So this much only. Acha. Anyone Yes, would like to add to what he said? Sir, also in fiber crops, we study about jute and formation of silk through silkworm. So we didn't study sericulture. Sericulture? What is sericulture? Hello? Who can answer? What is sericulture? The rearing of silkworms to obtain silk from them is known as sericulture. Okay. So rearing of silkworms and then finally taking the silk out of the silkworms. Not out of the silkworms, but the covering that they make out of that silk thread is produced. Okay. याद रखना सब लोग भूल जाते हो क्यों? Okay, so today we are going to finish this session of agriculture, and today we are going to look at India and the technology and institutional reforms that has taken place in the last many years after independence. So जैसे कि हमने पहले भी देखा था, हमने डिस्कस भी किया था कि agriculture is the main source of livelihood in India. And agriculture has been practiced in India for thousands of years now. Sustained use of land without compatible techno-institutional changes have hindered the pace of agricultural development. तो यहाँ पे इंडिया में agricultural development इतनी तेजी से क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है कि जो लैंड का यूज है उसके साथ जो हमारा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होने चाहिए थे, जो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस होने चाहिए थे, वो नहीं हो पाए. So that is why we have not been able to see the changes. आप लोग सब, आपको स्क्रीन दिख रहा है क्या? No, sir. Okay, so let me share the screen with you. Okay, so welcome Jayashree, you are from Kendriya Vidyalaya Baleswar, so we welcome you.
Thank you, sir. So, yes. Now I think screen should be visible. Yes, sir. Yes, sir. Chalo. So, we are going to look at technology and institutional reforms. So why has India not improved in technical and institutional reforms in agriculture? So that we are going to see today. Okay. Now, okay, today let's do something different. First point ko, I want Jasmine to explain. First point. पढ़ के मुझे explain करो. सबको explain करो rather. Yes, sir. Okay. In spite of development of sources of irrigation, most of the farmers in large parts of the country still depends upon monsoon and natural fertility in order to carry out their agriculture. Okay. What does this mean? So, I mean, although we have lots of sources of irrigation such as dams, wells, pumping systems, but still a large part of country still depend upon the primitive source of water, that is rain or monsoon, and the natural fertility. Okay, very good. Thank you. So, sir, sir, why this occurs means they don't have much money or exactly. They can't afford. What happens that, you know, irrigation is something, okay, ये बहुत लंबा discussion है, but फिर भी I just want to very shortly explain it to you. See, irrigation means basically what happens, you need water. And water is very important for agriculture, for production, for growing of the crops. Now, what happens, India basically is a dry land. It's not that, you know, throughout the year you will get rainfall. So the second problem is that जो हमारा जो rivers हैं, the rivers are not like, you know, जैसे मैंने पहले बताया था कि the arable land, मतलब जितना हम land को यहाँ पे cultivate करते हैं, जितना land है, हर जगह पे पानी का सुविधा नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है. So जैसे राजस्थान है, गुजरात है, so those areas, there are parts of those areas where there is absolutely no rainfall, hardly any rainfall. तो अब होता क्या है कि वैसे अगर ओडिशा के भी इंटीरियर में जाओगे, हर जगह पे आपको इरिगेशन नहीं मिलेगा. तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि जनरली जंती गाँव रे कौन महारा करिकी गोटे जगह पानी थी ताकू महारा करिकी निजर क्षेत्र छाड़ती. एंड एज वी महारा मीन्स गोटे नाଳ भଳିଆ एंती छोटो नाଳ भଳିया गोटे करिकी ताकू नेकी से छाड़ती. हाँ, बालेश्वर साइड रो माने हाँ जानि परथिबे सेटा भलरे महारा कर ना माने छोटो केनाल भड़िया बहुत छोटो एकदम पतला केना तापाई भी तो मैनुअल लेबर दरकार ना. सो नाउ व्हाट हैपेंस बेसिकली कि जते बड़ को पानी नाही, so how do you do agriculture? And we have already discussed in the past sessions that धान पाई हमर जोटा चावल होची पैडी पाई we require a lot of water. Okay, so in that case why that has you know धान कहीं की ताले सही जगह रे सही टाइम रे रोपण करा जाए जो समय की मानसून आसीबो. ओके, सो जतबेल को मानसून आसे, when monsoon comes to India, that time people do agriculture or सही समय से माने they sow the crops. Now by doing that they are in some form or the other dependent on the monsoon. कहीं कि ना जदि आमे effectively irrigation आम जो rivers अच्छी ताकू भी गोटे आमे channelize करके पानी को store करके आमे ताकू देई पारुनु. You know, that thing has not been developed so much. So that is why people are so much dependent on the monsoon and the natural fertility. क्या fertilizer भी आमे लोगों को देई पारुनु सबु जगह को सबु चासी मान को fertilizer देई पारुनु. क्या of course poverty is a big issue. जो माने छोटो चासी जो उन पे पैसा बेचने से फर्टिलाइजर किनी परिवेन, सो नेचुरल फर्टिलिटी पर से डिपेंड करछन. ओके, शांतनु, कैन यू एक्सप्लेन द सेकंड पॉइंट?
Yes, sir. Sir, Okay. agriculture needs serious technical and institutional reforms. Sir, as our Indian population is increasing very day by day, so if we doesn't grow in technological like use of HYV seeds and other modern equipments, then we cannot feed the large amount of people. So we have to use some modern techniques to increase the amount of production by which we can balance the population. Okay, that means amuko technology ko besi use karya ko padibo. So we have to use a lot of technology, and at the same time there has to be some reforms at the institutional level. That means amara jo law achi, jo amara rules and regulations achi, amara jo directives achi, at that level there should be reforms for agriculture so that it will be beneficial for the farmers and people will be more interested to go for agriculture. Okay. Third point, Shubham. Yes, sir. Yeah. Collectivization, consolidation of holdings, cooperation, and abolition of zamindari, etc., were given priority to bring reforms in the country after independence. Sir, collectivization, consolidation, holdings, cooperation, and the abolition of zamindari, these were abolished after our country got independent. Our country got independence, to bring reforms to our country, because these were the main defects of the agriculture. No, Shantanu. No, Shubham. Actually, see, abolition of zamindari was an evil. जोटा कि definitely was a negative point जोटा को ठीक करागला और abolish करागला जमींदारी system जोटा थिला. आगुर जमींदार माने थिले सुनिथिबो तो माने. Yes, sir. Yes, sir. जमींदार का पाखे कौन थिला? They used to have lot of land. So yes, sir. land रा किछि limit न थिला. Any amount of land they can hold. Now, collectivization and consolidation of holdings is a different thing. Those are positive things. Those are not negative things. Those things have happened after independence. What is collectivization? Like, for example, if there are a lot of small farmers with less number of land, a less amount of land, they are brought together for collective farming so that their yield will be more. What is consolidation of holdings? As you know that when one person has 4 sons, so the one person, if he is having 4 acres of land, then that land is being divided and each one gets 1 acre. So the land is getting smaller and smaller. Okay, the land holdings. And there was a joint effort by the government as well as by the civil society to bring together or consolidate these holdings so that the land use can be more and better. And cooperation was also definitely was the requirement. And this abolition of zamindari system that we'll look at also at a later stage now, that were given priority so that reforms in agriculture can come after independence. Okay, the next point, it's very it's self-explanatory. Land was the main focus of the first 5-year plan. First 5-year plan, the land was the main focus. Okay, Arijit, can you explain the next point? Right of inheritance had led to fragmentation of land holdings. Yes, Arijit. No, sir. Acha, you cannot explain? Bujhi parivani? No, sir. Acha. Ankita, can you explain this? Yes, Ankita. Ankita, can you explain this? Achha, we can't hear you. Acha, Pratyush, can you explain this? Shovik? Shovik, yes, can you explain? Yeah.
Right inheritance had led to fragmentation of land holdings. So the inheritance which is given that land was were divided and distributed among different The groups. children of the next generation. The children. Yes. So land was divided into different Small, to their families. Right. family members, and that led to the division. So the land with universe becomes smaller. Smaller, exactly. So now you understand, right to inheritance mane jodi moro bapanga pakhe jo land achi seta ko mu inherit kali kintu mu ekla kalini मोर अन्य भाई भौणी माने जो थिबे मोस्टली भाई माने भौणी मन केते हो तो दिया जाउनतला आगरु एबे तांकर बेसी राइट्स को हमें फोकस करूछु सो भाई माने कोन करथले तांका भितरे लैंड बांटी दोथले सो बांटी दलारो कोन होतला कि लैंड छोटो हे होतला फ्रैगमेंटेड हे जाउतला सो व्हेन फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स हला सो दैट also created lot of problems because छोटो जगह रे चासो कले naturally तारा yield कम हो. Okay, the last point. Any one of you like to explain? Laws of land reforms were enacted, but implementation was lacking. Any one of you? Sir, can I try? Sure. Sir, although laws were made, reforms were done, but in the root level, they were not implemented. Zamindari system was still there in some places. And proper implementation was not there. Correct. So basically what happens, law बनेवा गोटे नियम बनेवा बहुत easy, but ताको implement करिवा बहुत is very difficult. Can you give me an example? निजर daily life रे गोटे example दे परिबो गोटे law अछि कि ताको implement होबो. Okay. Sir, new education policy. Okay. ताको implement करिया बहुत difficult. New education policy तो आसी गला, but ताको implement करिया बहुत मुश्किल. किंतु न्यू एजुकेशन पॉलिसी एटलिस्ट समस्ते टिके ना टिके ट्राई करिवे करिया पई बिकॉज़ जदी तमे सेटा को फॉलो न कलो तमरो पिला मानन को डिग्री मिलिबोनी सो एटलिस्ट चेष्टा करिवे एनी अदर एग्जांपल डेली तमरो डेली लाइफ रे सर नॉट डेली लाइफ ओके शुभम हां बोलो सर नॉट डेली लाइफ बट इट हैपेंस लाइक द some area is given to poor people. Once government made a law that 2,000 or 3,000 houses will be made, and and that will be given to some with some people, those who do not have any houses. Correct. But when the cost of money is for the making of the houses are passed for through the government officials, they keep the money and they do not implement. Means the government has made the law, but it is not implemented for the daily life of people. Jasmine, you wanted to say something. Sir, road rules, that traffic rules, some wonderful. Both were example. Excellent example. That's what actually I was hinting at. You know that road rules are there, like traffic lights achi, traffic light bana hechi na. So red light hela ame rahibu. Ame kon karu dekhu epator dekhu sepator dekhu. Police jodi nathiba ame jump kariki padai jao. No camera. Huh? Camera don't have camera. Yeah, I mean not in every place they have camera na. बहुत जगह camera नहीं. तो जोटी camera नहीं सेटी jump करी. Sir, but in every place the light doesn't work. Traffic lights. Exactly. So again, that is an implementation part. No, the law has been made that the light will be there, but the light is not working. So that is again another implementation part, right? So exactly, like for example, I would example of child labor. I mean, actually, child labor is banned in India, right? But yes, sir. आमे को गोटे छोट ढाबा को जीवो कोठी की जीवो आमे देखिबो सेठी गोटे छोट पिलाटी काम करथले. So जोठी नोटिस करा होनी किंबा जोठी आमे देखुचु जे लोक माने जोठी they are not aware or they don't want to implement it, so they will not implement it. It happens both in case of the government as well as for the population, for private people also. Okay, so these are the technology things that we can use but we are not able to use, like fertilizer ho, pesticides ho, which should be used. Eti dekho eti katai hochi on the right hand side, and epote tome dekhi parucho je kenti
irrigation pai ame dekhi parchu ethi एठी भी तमे देखि पारछो जे गोटे एमती ड्रोन ड्रोन भरी मशीन रे हमें भी यूज करि परिबा बट दोस थिंग्स आर सिंस दे आर एक्सपेंसिव सो people are not using it, so government should take the initiative of sir drone is used in USA, right? Absolutely in US and other countries they are heavily using. It is not used in India. No, it's not used in because their government is powerful and means people also follow their rules. Exactly. I mean the farmers are educated. Farmers are very rich. They are super rich people there. They are like us. Yeah, I mean here what happens? They are their maximum are businessmen. Yes, actually, you know what? Here we whenever we say मुसेनो कोथिली ना class रे आमे चासी सुनी लाखिले आमे माने एटा गरीब लोकटे हेतियो. We never can think that a farmer can be very rich, but this is in Odisha. You go to Punjab, the farmers are super rich. They are very, very rich because they are what they are doing. Khali nijar pai chhadi ki bhi samane commercial crops korchhandi. Okay. Kintu amar ethi kon hochi no amme khali nije ko subsistence farming re hi limited kariki rakhuchu. We are not able to outgrow that. So that is why these things are happening. Okay, let's. The farmers of America is doing smart work and hard work, but the people of India are only doing the hard work, not the no smart work, right? So, what are the steps? What were the steps taken by government in agriculture reforms? So, the first thing that government of India embarked upon was to introduce agricultural reforms to improve Indian agriculture in the 1960s and 70s. So 47 that's Swadhina, and after that, from 1960s and 70s, government started introducing agricultural reforms. The first one was Green Revolution, and Green Revolution was based on use of package technology. And then came White Revolution, which was also known as Operation Flood. So these were some of the strategies which were initiated to improve Indian agriculture. Now, what was package technology used in Green Revolution? In package technology, government gave a kind of package to the farmers in which they promoted use of technology, they promoted use of pesticides and fertilizers, and also encouraged organic farming. Okay, so this was Green Revolution, which they offered, which in fact created a lot of or had a lot of impact on Indian agriculture. Then came the White Revolution. White Revolution was basically dairy farming. Milk is white in color, na? So that is why it was called White Revolution or Operation Flood. And P.J. Kurian was the person who is generally recognized as the milkman of India, who brought this White Revolution. Dairy farming ko ethi popularize kariya pai, he took a lot of steps. And jo Amul tame aji khaucha, Amul ra ice cream, Amul ra chocolate, Amul ra milk, all of these, Amul ra dahi, all of this comes from this brain, all this Amul was the brainchild of P.J. Kurian. So there is a place in Gujarat. Acha, Amul, full form ke jani cho? Yes, sir. Anand Milk. Very simple after that. Adha to koi silent. United. So limited. Union Limited. Union Limited. Yes. Okay. So Anand Milk Union Limited. So the Anand is a place in Gujarat. Joti White Revolution start hala. So Amul seitu arambha hoichi. And today it is a household name, right? And this led to the concentration of development in a few selected areas. The problem kon hai Green Revolution. In Green Revolution and White Revolution, this development actually did not happen all over the country. It was concentrated in a few selected areas. For example, dairy farming became very popular in Gujarat, but since it all started there, but in other places it was not so popular. Aji ame dekhuchu ete barso pore Milky Moo, Milk Mantra, egoda sabu asiki India samane Odisha re asiki kamo koruchanti. They have started this. Odisha re Omfed bahut barso pore arambha hela. Okay, so
concentrate ହେଇକି ରହିଗଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ. So therefore in 1980s and 1990s a comprehensive land development program was initiated which included both institutional reforms and also technical reforms. So institutional reforms से कौन हला कि गवर्नमेंट बहुत किसी स्कीम बाहर कला जो थी कि से माने फार्मर्स को सपोर्ट करिवे एंड टेक्निकल रिफॉर्म्स रे केमिते हमें टेक्नोलॉजी को यूज करि परिबा से सब विषय से माने ऑफर कले. सो प्रोविजंस फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट कैलामिटीज काहे कि ना जेमिते हमें देखु छु लाइक यू नो मोस्ट ऑफ द पीपल और द फार्मर्स इन इंडिया दे आर डिपेंडेंट ऑन मॉनसून and sometimes if a cyclone comes the entire crop is destroyed. So there should be crop insurance if there is a natural calamity. माने दैव्य दुर्विपाक जोटा को कहउछंती ओडिया रे से जदी हेला किछि से भଳି natural calamity हेला ताले ता अगेंस्ट इंश्योरेंस थिले से लोकडा बंची जीवो अदरवाइज से डिस्ट्रॉयड हे जीवो तार क्रॉप डिस्ट्रॉयड हेला तो फैमिली भी डिस्ट्रॉयड हे जीवो. Then establishment of Gramin banks, that was a big initiative taken by the government through which prati gaon re choto gaon re भी ग्राम्य बैंक सब एस्टैब्लिश हला ताको ग्रामीण बैंक बोली कहंती आ ग्राम्य बैंक हां देन कोऑपरेटिव सोसाइटीज वर फॉर्मड. सो बहुत गुडा फार्मर्स आसिले एंड दे फॉर्मड कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड ए जो बैंक माने दे स्टार्टेड प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटीज टू द फार्मर्स एंड एट अ वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट सो दैट you know the farmers can be self-sufficient. So they provide loans for the farmers or for every people like means yes. businessmen? Yeah, see basically these banks were set up to provide loan to the farmers, but later on these banks they also started providing loans to other people but at a higher rate of interest. जदि जने फार्मर नउची ता पई बहुत लो रेट ऑफ इंटरेस्ट किंतु अन्य जदि प्रोफेशन रे किनबो ता पई हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. नाउ व्हाई दे स्टार्टेड आल्सो गिविंग लोन टू अदर्स बिकॉज़ से माने खाली फार्मर्स को लोन नै करी से बैंक चली परिबनी तांको भी तो बिजनेस दरकार ना बैंक नले केंति चलीबो. सो दैट इज व्हाई दे ऑफर्ड लोन एट अ हायर इंटरेस्ट टू अदर पीपल. बट यू नो गोटे ग्राम्य बैंक रे एनीवन कैन ओपन एन अकाउंट एमती नै जे खाली फार्मर्स माने करि परिबे समस्त को पई से गां रे जते लोक अछंती समस्त को पई सेटा गोटे सुविधा हे गेला. ओके एंड व्हाट वर द अदर स्टेप्स टेकन? द अदर स्टेप्स वर लाइक किसान क्रेडिट कार्ड, देन पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम PAIS जा कहंती. These were some of the schemes which are introduced by the government of India for the benefit of the farmers. ओके सो क्रेडिट कार्ड मो भाई पैसा नहीं क्रेडिट कार्ड रे भी हम यूज करछु किन किसान मान को भाई के दबो क्रेडिट कार्ड को बैंक दबो केबे भी दबन केन सेमान के इनकम नहीं ना जार इनकम नहीं जार रिस्क कवरेज नहीं सेमान को केबे भी से माने देबे नहीं क्रेडिट कार्ड. सो सेमान को पई गोटे किसान क्रेडिट कार्ड गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कला. सो परे जीवन में पेमेंट करि परियो निजो क्रेडिट कार्ड यूज करि परिबे. देन पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस जोटा को थिला जे एक्सीडेंट हले तांको पई तांको इंश्योरेंस अछि से गुडा सब से माने इंट्रोड्यूस कले. देन देयर वर स्पेशल वेदर बुलेटिन्स एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स व्हिच वर इंट्रोड्यूस्ड ऑन द रेडियो एंड टेलीविजन. से आज पर्यंत चली छी जे वेदर बुलेटिन हबो सब बळे हमरो वर्तमान वेदर कोन काली कोन वर्षा हबो न हबो वेदर अपडेट एंड देयर आर एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स आल्सो. मोर मन अछि आमे छोट बळे भी आमे देखि आसु कृषि दर्शन जोटा कि दूरदर्शन रे दोथला याको कृषि दर्शन बोली कहंती. एंड सातटा बेल को ऑल फार्मर्स काम सारी की घर को पळे आस्थिबे जहां भी घर टीवी अछि किबा सेतळे होय तो समस्त घर टीवी नथिला एबे सिना समस्त घरे अछि आउ होय तो जणे की दी जणे का घरे गां रे टीवी थिबो. सो दे ऑल यूज्ड टू गो एंड यू नो वॉच दिस प्रोग्राम. So those were the things that the government the steps which were taken by the government. The government also announces minimum support price MSP जोटा को हमें कहू remunerative and procurement. So minimum support price government गोटे कला जे एतिकी टंका minimum जणे क्रॉप तारा बिक्री कले ताकू मिलिबा दरकार. Okay, we'll talk about that a little later. Prices were important crop to check the exploitation of farmers by speculators and middlemen.
कौन होथला मनकर फार्मर्स माने तांकर क्रॉप कले सेही क्रॉप करू करू जो मिडलमैन माने आसिले से माने कौन कले किंबा स्पेकुलेटर माने तमर एतिके हिची माने मु तुमको एति पैसा देबी से जो मिडलमैन माने आसिकरी से मान को एक्सप्लॉइट करिया आरंभ कले मने कर जणे फार्मर गोटे धान तार खेत रे से तार धान हेची मने कर गोटे क्विंटल धान हेची तो से कौन कला से गोटे क्विंटल धान को से मिडलमैन आसिला कहला रे 20 टंका रे मते दे दे फार्मर कौन भाबिला जे अरे भाई एटा को नै कि मु जीबी केमती मार्केट पर्यंत ए जाऊ से जहा दोछि दो नै कि जाऊ से 20 टंका रे नै गला ये कौन कला ताकू तारो ट्रांसपोर्ट रे जिंस उठे करी नै करी ताकू मार्केट रे बिकी देला मार्केट रे के टंका रे बिकिला 40 टंका रे बिकिला सो से किछि काम न करी कि खाली ट्रांसपोर्ट रे जति की पैसा खर्च सेति की पैसा खर्च करी कि से जति की फार्मर पाइला से भी सेति की पाइला सो केते कष्ट करी कि फार्मर तार बनेला आ तार धान हैला किंतु तापरे ताकू प्रॉफिट मिलला नहीं सो दीज वर द थिंग्स व्हिच वर हैपनिंग अर्लियर व्हिच द गवर्नमेंट आल्सो स्टार्टेड टेकिंग steps against it. Then there was Bhudan and Gramdan movement. बहुत बड़ा movement हेतिला विनोबा भावे चाहकु कि महात्मा गांधी कर स्पिरिचुअल एयर HEIR जाको हमें एयर बोली कहू तार अर्थ कौन हु कैन से जेमिति तुमे तुम बापांकर एयर yes sir sir means the next gen of the next generation of generation the हमके दायाद बोली कहू ओडिया रे से वर्ड yes sir exactly that is the word so he is the spiritual heir of Mahatma Gandhi not the natural heir of course natural heir तो ताकर अन्य तांका पिला माने थिले किंतु spiritual heir माने तांकर आत्मिक दायाद बोली हम तांका कहि परिबा he also participated in satyagraha Vinoba Bhave तांकु आचार्य विनोबा भावे बोली कहा जाए and he was one of the foremost satyagrahis he supported Gandhiji's concept of gram swaraj कौन थिला gram swaraj रो अर्थ होची that गोटे गा गांधीजी को सेरा ड्रीम थिला जे गोटे गा जेमती कंप्लीटली सेल्फ सफिशिएंट हे परिबो ओके से माने का ऊपर डिपेंड करिबेनी गोटे गा जेमती that was called gram swaraj. But after Gandhiji's martyrdom, when he was killed, Vinoba Bhave undertook Padayatra kale to spread this message throughout the country, okay, of Gram Swaraj. And when he was in Andhra Pradesh, some landless farmers demanded land for their economic well-being. Say samare kichi farmers, they came to him and they said that, we are economically very weak. So we do not have land, please provide us with land. He assured them to talk to the Indian government for the provision of land for them if they undertook cooperative farming. Vinoba Bhave तांको कहले हो ठीक अछि तमे जदि कोऑपरेटिव बने दबो समस्त मिसी जीवो ताहले मु इंडियन गवर्नमेंट से कथा हेबी तमन को लैंड दिया जीवो तमे कोऑपरेटिव फार्मिंग करियो ने मिसी की फार्मिंग करियो तापरे Vinoba Bhave he started this Bhudan movement and the first person he was from Andhra Pradesh only, Sri Ramachandra Reddy. He stood up and he offered 80 acres of land to 80 landless farmers. And this was known as Bhudan. And later on, he introduced his ideas throughout India. And throughout India, this Bhudan movement started. And some zamidars, they offered to distribute villages among the landless. कहना जमीदार मान को पाखरे पूरा गाँ गाँ गोटे गोटे गाँ से मान कर अंडर रे थिला सो सही मूवमेंट को कहा गला ग्रामदान भूदान परे ग्रामदान हाउएवर ए जो जमीदार्स माने थिले से माने काहे की ग्रामदान और भूदान मूवमेंट जॉइन कले काहे की ना से माने डरू थिले जे जतबड़ को लैंड सीलिंग एक्ट कहना गवर्नमेंट से तो प्लान करथला जे लैंड सीलिंग एक्ट करिवो लैंड सीलिंग एक्ट जति हे गला ताले तांगे सब जमी चल जीवो सेहि थि का से माने दान करबा को आरंभ कले व्हाट वाज लैंड सीलिंग एक्ट जे गोटे व्यक्ति एतिकी लैंड रखि परिबो किबा एतिकी एग्रीकल्चरल लैंड रखि परिबो ताठ अधिकार रखि परिबो सो दैट वाज द लैंड सीलिंग एक्ट
So this Bhudan and Gramdan movement initiated by Vinoba Bhave is also known as a bloodless revolution. It was a revolution in India of this Bhudan and Gramdan movement, but it was also a bloodless revolution. माने कहा को फोर्स करी की बाड़ी पिटी करी रक्त बुहेई करी काटू जमी निया गला नहीं समझते निज स्वेच्छा रे जमी दान कले. Okay, clear till now? Yes, sir. Okay. So contribution of agriculture to the national economy, employment and output. Now, agriculture has been the backbone of Indian economy through its share in the GDP. We all know what is GDP. I mean, what is that? Gross development. Right. Huh? GDP रा कौन full form? शुभम भूली भाली गलानी सब. Gross domestic product. GDP. Yes, sir. Okay, development coach. Okay, so GDP has registered a declining trend from 1951 onwards. In 2010-11, about 52% of the total workforce was employed by the farm sector. कौन हैला यहाँ पर 1951 परठु ना GDP हमरो कमी चलिला. हमें ऑलरेडी आगु देखिछु जे जो एग्रीकल्चर जो शेयर अछि केमिति धीरे धीरे कमी जाउछि हमें प्रथम देखिथिलु. सो 2010-11 में पहुंचला को only 52% of total workforce was employed by the farm sector. तो सेथि पई का हमें देखिलु जे जते बेल को कमी जाउछि, that means people are not doing agriculture, people are not depending on agriculture, which is the backbone of Indian economy. It was a very worrying and alarming factor. The declining share of agriculture in the GDP is the matter of serious concern, because any decline and stagnation in agriculture will lead to a declining in other spheres of economy, having a wider implication for the society, which means that jodi agriculture ro contribution in that GDP komi jaye, tahele it will start affecting the other aspects of the economy, other sectors of the economy also. So sethi pai tapare dhire dhire kon hela, Indian government started establishing different organizations, institutions, so that agriculture can be given more prominence. Prathame Indian Council for of Agricultural Research (ICAR) सेटा establish करगला. तापरे agricultural universities, veterinary services, and animal breeding centers, horticulture development, research and development in the field of meteorology and weather forecasting, etc. were given priority for improving Indian agriculture. So, ये सब setup करा गला so that हमारा Indian agriculture को आहुरी develop करा जाए पर. Veterinary service माने कौन? Animal treatment. Animal treatment. जो animal मन को देह खराब हुए, सेमन को hospital को हमें veterinary बोली को नहीं की. So veterinary hospital. So veterinary service माने तांको treatment पाएं. अच्छा हमारा ओडिशा रे कोठी university अच्छी agricultural university जानी चाहिए. OUT. OUAT, very good. Good. That's Sunaveda. Sunaveda रे भी अच्छी, भुवनेश्वर रे भी अच्छी. Yes. Odisha University of Agricultural Technology, OUAT. Very good. बर्तमान तमे देखो ए जदी तमे ग्रोथ ऑफ जीडीपी एंड मेजर सेक्टर्स जदी हमें देखिबा तमे देखो हमरो एग्रीकल्चरल ग्रोथ जीडीपी रे कितने कम होची. एग्रीकल्चर फर्स्ट 10th 5-year plan जो 2002 to 2007 1.7% ओनली थिला, तापरे 3.2% हला, तापरे 4.0% हला, आउ टारगेट सेकंड रे 4.2% अछि. सो तमे देखो केते ग्रोथ रा केते कम ग्रोथ ऑफ जीडीपी ऑफ एग्रीकल्चर. सही हिसाब रे तमे इंडस्ट्री देखिबा फर्स्ट थिला हमरो 8.3, तापरे टिके कमी गला 7.4, तापरे पुनी 9.6, तापरे 10.9. सर्विसेस रे 9.0, 10.0, 10.0, 10.0 स्टेबल अछि. टोटल जीडीपी
आमे जदि 7.2% एई तीनटा एक सेक्टर आमे जदि माने ये करके तार एवरेज बाहर करछु ताहले केते होउची हमर 7.2 नहीं कि तार एग्रीकल्चर केते रहला 1.7 देखु छ एग्रीकल्चर अवस्था कोन सेकंड हमर सेकंड 11th 5 ईयर माने सॉरी 11th 5 ईयर प्लान रे 8.2 होची हमर जो एवरेज जीडीपी ए तीनटा सेक्टर तादरे एग्रीकल्चर रे कंट्रीब्यूशन केते ओनली 3.2 माने कंट्रीब्यूशन इन द सेंस कि जदि हमें एग्रीकल्चर रो एवरेज देखिया तले केते 3.2 एपटे देखो 9.0 से ऊपर हेलानी 4.0 9.5 4.2 सो एग्रीकल्चर रो जो हमर जीडीपी रे कंट्रीब्यूशन तमे देखो बहुत कम एग्रीकल्चर देखो 1.7 एठी हेलानी 8.3 9.0 so that is why it's a very alarming and it's a worrying factor. Though GDP rate is increasing over the years, it is not generating sufficient employment opportunities in the country. And growth in agriculture is decelerating. Accelerating, artha janicha? What is accelerating? Koti accelerator thai? Increase way like accelerator था the जगह speed increase way हाँ तो जतरो को accelerate हमें करो चु speed टा increase होची so decelerating माने slow हवा slow है exactly so growth in agriculture is decelerating. Indian farmers are facing a big challenge from international competition and our government is going ahead with reduction in the public investment in agricultural sector. So farmers are facing big challenge. We all know that. Kind of international competition hai galani. And jo public investment thila, government is also reducing that in the agricultural sector, which is again going to be a big challenge in the future. Subsidy on fertilizers is decreased, leading to increase in the cost of production. Jodi fertilizer price decrease माने जो सब्सिडी मिले तो सब्सिडी जदि कमे दिया जीवो ताले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी जीवो तमे देखो ऊपर से फार्मर सुइसाइड रो गोटे फोटो अछि तमे देखि पारथो तमे देखु जे दी जण को डिफरेंस तळे माने दी जण ठिया आइछन ऑफिस जीवा ऊपर से फार्मर दीटा भितर कंट्रास्ट देखि परछो. So reduction in import duties on agricultural products have proved harmful to agriculture in the country. जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जोटा को बाहरु इंपोर्ट करा जाउची सेई तार जतर को इंपोर्ट ड्यूटी गोटे जोटा लागे आगु हम थोरे इंपोर्ट ड्यूटी विषय कथा आइथिलु सेटा दि कमे दिया जिवो ताहले बेसी इंपोर्ट हबो बेसी इंपोर्ट हेले हमरो एठु जो माने फार्मर्स से माने अफेक्टेड हेबे कि नहीं. यस सर बाहर जदि बेसी हमरो चाष रिलेटेड जिंस आसीबो बाहरु ताले ऑब्वियसली हमरो जो farmers mane ethi affected have. Farmers are withdrawing their investment from agriculture, causing a downfall in the employment in agriculture. Eta bhi ame dekhichu. Nobody wants to do agriculture. You know, you talk to any person jahara bappa ma chaso korthile tanga puo ku pacharibo ko chaso karibo nai pache mu shahar ku jai ki sethi gote choto labor kama karibi kintu chaso kama karibi nahi. Okay, so this is the pathetic situation of agriculture in India. I would say India is the largest waster of food. आमे सबुठु अधिका हमर खाद्य वेस्ट करू नष्ट करू एंड दिस इज अ क्रिमिनल ऑफेंस हबा दरकार जे खाद्य वेस्ट करियो ताकू बांधी करी जेल रे पुरेवा कथा मजाक करूची किंतु मु पिला माने तम समस्त कहूची केही भी खाइबा वेस्ट करिवो नाही के करछो कि वेस्ट किए करछो वेस्ट को आज गोटे ऑनेस्ट कन्फेशन हो केते जण पिला खाइबा वेस्ट करछो किछि नाही मु सतरे जेल रे पुरेबी नहीं मजाक करथिल कहि दिया सतरे कहि दिया किए वेस्ट करछो खाइबा सर हैंड्स अप हो गया शुभम वेस्ट करछि अच्छा समस्त हैंड्स अप कर दिंतु ओके आउ एनीवन एल्स आउ माने करछन किंतु कहू नांती ना they are not honest
अच्छा, they are not honest. Yes. Okay, Sir, Arjun. but honestly, I doesn't waste food. You don't waste food. Very good. नहीं सर, वो करते हैं लेकिन उनको मालूम नहीं, लेकिन वो करते हैं. अच्छा, करते हैं. कैसे करते हैं? तुम्हें कैसे पता चला? सर हर कोई करता है. सर हर कोई करता है. कैसे करता है? सर, हाँ. You go to a party, so there you eat some food. You feel like I can eat more. अच्छा. Okay. Then you know the process. अच्छा, हाँ, जब शादी वादी का जो पार्टी होता है वहां पे हम कर लेते हैं. हाँ, ये तो बात सही है. Yes sir. Right. So the food I waste or not, that depends upon the food. हाँ. So that depends. Sir, I waste food or not, that depends on which food is that one. हाँ, अगर चिप्स का पैकेट है तो उसका अंदर को जाके जो छोटा छोटा खुंटी वाला पड़ी था ताकि भी चाटी खाई दो ना. किंतु yes sir. जदि भात डाली सब्जी थी वो ताहले टिके असुविधा हुए. ओके. No sir, dal is my favorite. अच्छा, दाल is your favorite. Good. Very nice. ठीक है. So okay, let's try not to waste food, है ना? Because there are so many people who are going without food in India. So what is food security? Food security system. In order to ensure availability of food to all sections of the society, our government carefully designed a national food security system. And तारा dita part thila, dita component thila. One was buffer stock, and the other one was PDS, or public distribution system. PDS is a program which provides food grains and other essential commodities at subsidized prices in rural and urban areas. अच्छा, राशन कार्ड विषय तुम जानिछो? केतन जानिछो राशन कार्ड? ओके. प्राय जनरली आम घरे गोटे गोटे राशन कार्ड था. एबे तो गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट ही जाइछि आ समस्त को राशन कार्ड दोनी आगे बढ़िया. एबे ओनली आई थिंक बीपीएल फैमिलीज को दोचंती, समस्त को दोना. तथापि आई थिंक बहुत जन को मिलुछि, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जहां पाके अछि सबको मिल जाउछि. सो राशन कार्ड जहां पाके अछि से माने जाई कि मासकू एतिकी किलो चावल, एतिकी किलो गहम, आउ कौन सब थाए तांकर बाजरा ये से सब अलग प्रकार सब जिंस जो कोर्स ग्रेन्स अछि से गुडाकू से माने से राशन दुकान जोडा कंट्रोल दुकान कहंती, से कंट्रोल दुकान रो जाई कि से नै कि आसंती. Why it is called control दुकान? Because the control is माने गवर्नमेंट रो कंट्रोल अछि, तापरे एतिकी जिंस एतिकी लोकन को दिया जिवो, तांको पाखु सेटा आसे और दिया जाय. It's at a very subsidized rate. माने सेही गहम जदी बाहर आमे किनिबु 40 टंका रे तो सेठी 20 टंका रे मिलिबो ए भड़ी. Okay, so this kind of a subsidy that is known as public distribution system. The primary objective of this policy is to ensure food grains to common people at affordable prices. Bartaman amar pakhre a gote prashna uthuthibo je what about the टंकिकिया चावल? The टंकिकिया चावल जोटा को आमे एठी मिलुची गरीब लोक मानको पई, सेटा also, that is also. Again, now let's come back to Shubham and discuss about the implementation part. बहुत जगह कौन होची सही टंकिया चावल को नहीं लोक बिकी भी दोचन, बिकुचन कि नहीं सेटा भी करचन, सेटा भूल. किंतु the objective of that policy is good. The objective of that policy is केही भी भोक करे न मरु. टंकिकिया चावल पछे मिलु 35 किलो चावल जदी मास को मिलला ता घरे at least लोक केही भोक करे मरिबे नहीं. The objective of the policy is good. But the other side of it is टंकिया चावल समस्त को मिल गला, बहुत लोक को मिलला, जो माने डिजर्व को नांदी सेमान को मिलला, इंप्लीमेंटेशन रे प्रॉब्लम हैला. ओके, सो पॉलिसी इज गुड लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन बैड है, इसलिए उसका जो नेगेटिव इंपैक्ट लोगों के ऊपर पड़ा. So it is like that the water is very pure and clean, but there are many holes in the pipe. Yes. हाँ, लेकिन ये किस तरह से हम उसको इसके साथ कर सकते हैं? हाँ, मतलब फाइनल जो आउटपुट है वाटर वो जिसके पास पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाता शायद, ये हो सकता है. करेक्ट. सो this policy focuses on growth in agriculture production and on fixing the support price for procurement of wheat and rice to maintain the stock. Okay, तो जो बफर है ना, बफर स्टॉक इसलिए रखा जाता है. क्यों रखा जाता है?
एक गोदाम में बफर का मतलब है कि एक्स्ट्रा स्टॉक इसलिए रखा जाता है कि कल को अगर यहाँ पे अकाल पड़ता है, कल को अगर यहाँ पे फैमिन होता है, अरे कल को यहाँ पे अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाता है एंड खाने का चीज नहीं पहुंच पाता, तो बफर स्टॉक से लोगों को दिया जाएगा. You know, you must have experienced that, you know, when the lockdown happened, all transportation, everything was stopped. But still the government said, हमारे पास इतना है कि हम लोग अगले 4 महीने तक लोगों को खिला सकते हैं. That मतलब क्या है उसका? इसका मतलब ये है कि उनके पास बफर स्टॉक है जो कि वो लोग पहुंचा सकते हैं लोगों के पास. Then Food Corporation of India was set up and it procures and stocks food grains, whereas distribution is ensured by PDS. फूड को स्टॉक कौन करता है? FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. एंड उसका डिस्ट्रीब्यूशन को कौन इंश्योर करता है? PDS और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो राशन कार्ड के थ्रू होता है. ठीक है. So how are food grains procured? What are the disadvantages and advantages of this method? Now हम लोग ने देखा FCI और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या करता है? प्रोक्योर्स द फूड ग्रेन्स फ्रॉम द फार्मर्स एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस. अभी हम बोले थे ना, वी हैड डिस्कस्ड अबाउट मिनिमम सपोर्ट प्राइस. सो व्हाट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस? मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज दैट कि अगर मार्केट वैल्यू इसका 40 रुपए होगा, इफ इट इज 40 रुपीज, द फार्मर should get this MSP on the essential food grains. Like for example, मान लो कि ये राइस हो गया, व्हीट हो गया, उसमें एक MSP दिया जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस. दैट मीन्स गवर्नमेंट इंश्योर करता है कि अगर आप अपने खेत में चावल उगा रहे हो तो गवर्नमेंट आपसे चावल खरीदेगा एट अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस. आपको 30 रुपए मिनिमम मिलना ही मिलना होगा. गोटे छोट एग्जांपल दूची. आमर सबू तमे जानिथिबो एबे कोन होउची ना, बहुत जगह हमर धान मंडी थाए. धान मंडी रे कोन हुए कि किसान माने आसंती, जो फार्मर्स माने आसंती एंड से माने निजर पूरा धान नहीं के आसंती और धान मंडी रे बसंती, कि सब्जी मंडी रे सब्जी फार्मर्स माने आसी बसंती. सो धान मंडी जो समस्त जो धान नहीं आसी बसी थे, से समय कौन करेंगे, किसी मिडल मैन आसवे, से माने कहे भाई कहीं बस मत दे दियो 20 टंका मु नहीं चल जीवी. किंतु मिनिमम सपोर्ट प्राइस केते थिबो? 30 रुपीस. माने गवर्नमेंट एन्श्योर करछि ता तळकू केही तांकटू किनि परिबे नाही, तांकू सेति के पैसा मिलिबा दरकार. किंतु से माने जदी आसी सेटा करिकि गोटे लोकटू नेकी चली गले, ताहले कौन हबो? से लोक बिचरा लॉस रे पड़ी गला. किंतु जदी से लोक धरा पड़े मिडलमैन, ताले ताकू ता अगेंस्ट रे फाइन भी लागि परिबो, ताकू माने ता अगेंस्ट रे कानूनी कार्रवाई भी हेई परिबो. किंतु गवर्नमेंट ए समय FCI आसीबो एंड FCI रो ऑफिशियल्स माने आसी कि ताकू MSP रे नै कि जिबे. वर्तमान हमें देखिवा इंप्लीमेंटेशन रे कोन कोन इश्यूज हेई पारे. मते कहि परिबो कि देखिवा, लेट्स सी कौन चिंता करछो, केते दूर तमे भाबुछो, हाउ मच यू आर थिंकिंग, लेट्स सी. इथरे इंप्लीमेंटेशन रे कौन प्रॉब्लम्स होई पारे? Sir, the FCI officer may be corrupted. ओके, करप्ट हेले कौन करिवे, से माने आसी कोन कहिवे? सर करप्ट हेले से मींस जे मींस नै ची सर स्टार्ट और किछि पैसा काई की सेमन कह देबे कि हां सेटा गोटे वे तांगडू किछि पैसा नै जे मु तमरो बिके दोछि, मते किछि पैसा दियो. हां सेटा करि परिबे, बट दैट इज अ लिटिल डिफिकल्ट. कैना गोटे पब्लिक एरिया रे आसी कि एटा करिया बहुत डिफिकल्ट. यू नो व्हाट दे कैन डू? दे विल कम एंड से दैट द प्रोडक्ट, तमर जो प्रोडक्ट नै कि आछो, तमे जो धान नै कि आछो का खराब हे जाईछि, ता क्वालिटी खराब हे जाईछि, हमें ताकू नै परिबो तमर. बुझि पालो? yes when they say that, the farmer can't say anything. एंड सही समय गवर्नमेंट भी चैलेंज कर परिबन जे तमे काई की ताठू धान नेलो नाही. से माने कहबे हमें चेक कलु तो क्वालिटी ठीक नथिला. Sir, but I doubt that
से गोटे फार्मर थारो आउ केसे से चावलटा भलो कि भलो न कि बेटर देखि परिबो ना ना एफसीआई रो तांकर एक्सपर्ट्स अछंती ना से माने नहले तो किए भी खराब चावल आनी तांको बिकी देक चल जिवो एफसीआई कोन नबो ताकू एटा पूरा गवर्नमेंट एजेंसी तांकर एक्सपर्ट्स माने अछंती ना जो माने आसी चेक करी कि क्वालिटी देखि कि नेबे आ जदि धान चावल खराब मने कर सपोज तांकर कोन हिची से समय रे कटाई समय रे गोटे वर्षा ही जाइछि सबु जाक धान खराब हो जाइछि ताकू किंतु अछि तो चोपा भितरे किंतु बाहरी जाइछि गजा बाहरी जाइछि ताकू आनी रखि देले कोन नै जिवे किए किए कहबो सेटा भलो कि खराब बोली जणे तो किए ताकू सर्टिफाई करिवो ना सो सेटा होछि एफसीआई रे काम तांका ऑफिशियल्स माने आसी कि सेटा करिवे एंड आफ्टर दैट किंतु बहुत समय रे करप्शन सेइत्रे हुए ओके एबे मु गोटे छोटो वीडियो देखुतिली जोथरे कि तांका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जी से आसी कि जो गाड़ी देले से लोक माननकु तांकर एफसीआई रे जो लोक मान थिले कहले आप क्यों एमएसपी पे यूपी रहतला एमएसपी पे हम क्यों नहीं उनको दे के खरीद रहे नहीं सर क्वालिटी क्या क्वालिटी होता बहुत गाड़ी देलता किछि कला ये क्वालिटी बिल्कुल ठीक है देखला उठेला कहला कोन मते प्रूव करो काहे कि एटा क्वालिटी खराब से माने किछि कहि पाइलेनी कहले समस्त को एठो बिका चावल तो माने नै कि जीवो एंड तांकू एमएसपी दिया जीवो so you know those kind of things so it happens. So the government used to provide subsidies on agriculture inputs like fertilizers, water, etc. But these have now reached sustainable levels and have also led to large-scale inefficiencies in the use of these scarce inputs. Okay, so what a sustainable level रे पहुंची गला परे मध्य आमे देखुछु जे जो inefficiency अछि सिस्टम भितरे सेथि पई का इनपुट प्रॉपर्ली आसी पर नहीं माने लोक माने ठीक जगह रे आसी पहुंच पानांती कि तांका पाके सिस्टम पहुंच पानी सो सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज हैपनिंग. Excessive use of water and fertilizers have led to waterlogging, salinity and depletion of micronutrients in the soil. So अधिका पानी किंबा फर्टिलाइजर जदि हम यूज करू ताले कोन हबो पानी वाटरलॉगिंग हबो पानी जमाई कि रहइबो सैलिनिटी अनेक समय रे सैलिनिटी माने कोन जानिचो लुनिया पानी लुनिया हे जिवो एंड डिप्लीशन माने कमी जिवो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जोटा सॉइल रे थाए सेटा कमी जिवो एटा भी होउची. The high MSP subsidies in inputs and committed FCI purchases have distorted the cropping pattern. Okay, अच्छा इटार अर्थ कोन MSP जतरो को जण को मिलिला उनका 30 टका मिलिला मोर चावल पाई मते. ओके सो मु जानिली जे मो पछरे FCI ठिया आइची मो पछरे गवर्नमेंट ठिया आइची मु जहा भी कले मो जदी धान बाहरी गला मु ताको बिके दे परबी 30 टका रे मु अन्य क्रॉप आ करबी जहार MSP नाही. नो सर यही करिबेनी ना से माने देखिले जे अन्य क्रॉप करबी ताको बिकी परिबिनी काई करबी. सो तादरे कोन होची क्रॉपिंग पैटर्न डिस्टॉर्शन हो जाउची माने गोटे जमी ऊपर ओनली धान रो प्रेशर पड़ला. मोर एग्जांपल दोची धान रो प्रेशर पड़ला ओनली धान ही धान सेठी होची अन्य किछि क्रॉप करनांती. रोटेशन क्रॉप जदी न हुए ताले से लैंड रो फर्टिलिटी कमी जाए. हम जानि छु एटा पढिछु सो सेठी धान रो पई जो न्यूट्रिएंट दरकार सेटा पूरा कमी जिवो तो पूरा कमी जिवो तादरे. ओके wheat and paddy crops grown in Punjab and Haryana are for the MSP they get, which has created serious imbalance in intercrop parity. So intercrop parity और होनी खाली लोक बसी की wheat और paddy ही grow करछंती. So अन्य crop आउ बेसी grow ही पारुनी काहे ना तामको MSP मिल जाउची ता ऊपर. This is also another problem. So how are consumers divided? What are its drawbacks and disadvantages? Consumers माने जो माने हमरो खाउटी माने जो माने कंज्यूम करन जिंसो they are divided into two categories. गोटे होची BPL और below poverty line and आ गोटे होची above poverty line APL. However, this categorization is not perfect as number of deserving poor are excluded from the BPL category and some of the so-called APL slip back to BPL because of the failure of one crop and it is administratively difficult to accommodate such shifts. बुझी पाला एटा किए बुझे परिबो एटा ए पॉइंट. Sir, it is very difficult to difference between a APL and a BPL person.
Because if one crop failure is there, APL category also slips जो into माने APL BPL. से सब BPL को BPL. पड़ेगा And किंतु in गवर्नमेंट BPL सेटा को रिकॉग्नाइज करिवनी एते जल्दी and BPL category who don't have that cards or the education to get that, what are the facilities available to them, they will not get. आ सेति पई का बहुत डिजर्विंग पुअर भी BPL कैटेगरी रे आसु नाहंती. How can we become self-sufficient? Now, self-sufficiency can be attained if government provides proper agricultural infrastructure, credit linkages, and also encourage the use of latest techniques. Both simple agricultural infrastructure, credit linkage, that means जहाँ पाके पैसा नहीं ताको भी credit मिलिवा दरकार, so that से तारा business करी पारिबो, agricultural business, and also encourage the use of latest techniques. Instead of concentrating only on wheat or rice, the food crop with a better growth potential in that particular area must be encouraged. Means no must. Creation of necessary infrastructure like irrigation facilities, availability of electricity, they may also attract private investment in agriculture. So irrigation टा बहुत important. पानी नथिले agriculture ही परिवानी. Electricity रहिले पानी आसीबो काहे कि ना पंप चलिबो ना. Yes, sir. Manual पेरे तो करिबा बहुत मुश्किल. The focus on increasing food grain production, which should be a sustainable basis, and also free trade in grains, will create massive employment and reduce poverty in rural areas. जदि आमे food grain production increase करिबा पर बेसी focus करू, ताहले सेटा गोटे sustainable development हबो. आउ जदि ग्रेन रो फ्री ट्रेड हे परिबो ने जे भी जोठी जतोले नै नै चाहि कि बिक्री करि परिबो ताहले लोक मान को पाखे बेसी एम्प्लॉयमेंट आसीबो in rural areas. What is the future of India's food security? Shift from cultivation of food crops to cultivation of fruits, vegetables, oil seeds, and industrial crops. कौन है इटा किए बुझेबो? Who can explain? Who can explain? Instead of only growing wheat and rice, we can grow some others such as cashew, which has high commercial value. So fruits and vegetables, oil seeds, industrial crops, एगुड़ा ऊपर बेसी focus दवा दरकार. Competition for land between non-agricultural users and agriculture has reduced net sown area. Construction बढ़ी चली ची. हमने agricultural land को homestead land रे convert कर दोचु. Apartments बने दोचु सेठी. होची कोना? जो net sown area में arable land जो हमन net sown area सेटा कमी जाउची. Productivity of land is declining due to fertilizers, pesticides, and insecticides. एटा गोटे कथा मन रखिता. Fertilizer, pesticide, and insecticide जेते use करा जिवो land रो productivity सेते कमी जिवो. Yes, sir. Scarcity of water has led to reduction of area under irrigation, whereas inefficient water management has led to waterlogging and salinity. It I may discuss research already. This point. So, एटा होची हमारा food grain production in million tons from 2006-07 रू नेकरी 2010-11 पर्यंत. Rice टा केते होची तमे देखो. Population जो हिसाब रे wheat देखो, wheat टिके अधिका बढ़िची. Coarse grain कमी जाईची. देखुचो? Pulses बढ़िची. Coarse grain कमी जाईची. काहे कि coarse grain रा MSP नहीं. कोर्स ग्रेन रो एमएसपी नाही. प्रथम कथा. द्वितीय कथा कोर्स ग्रेन रो कंजम्पशन कमुची. केते जण घरे बाजरा खाउचंदी? की खाउचंदी? तम घरे की खाउचंदी? के खाउनांदी. सो कोर्स ग्रेन जदी लोक न खाइबे ताले नेचुरली सेटा कमी जिवो. एंड राइस रो देखो केते कम हमरो ये प्रोडक्शन कम हेची माने बेसी बढ़ीनी. In relation to the population increase, population जो हिसाब से बढ़ुची हमारा production से अनुसार बढ़ू नहीं. You see the problem? So what has food grain production? Why has food grain production remained stagnant or fallen for 5 consecutive years? जो previous table रो हमें अभी क्या देखिलु केमिति हमारा stagnant रोची किंबा almost like हो नहीं. The reasons are land degradation, land ro productivity कमी जाउची.
reduced water storage in aquifers due to unsustainable pumping. जो एक्विफायर बना होतला ना पानी स्टोरेज करिवार जोटी के हमें इरिगेशन कर परिबो सेटा रिड्यूस हो जाईची सेगुडा कना पंपिंग ठीक से ही परनी. inadequate storage and marketing facilities. स्टोरेज पाई जागा नाही लोकन को पाखे तमे देखिथिबो माने धान जर काटंती तापरे सेमती पके दिथान सेमती खेतरे पड़ी थाए देखिछ कि नहीं केबे देखिछ कि सेमती खेतरे पड़ी थाए आ सेही समय हाथी आसंती खाई की पूरा नष्ट करी पड़ांती नहीं. हां तो मार्केटिंग फैसिलिटीज नहीं, inadequate storage seed पाई. So farmers have to pay high prices for HYV seeds, high yielding variety seeds, fertilizers, but lack bargaining power to fix prices in their favor. से माने अधिका पैसा दउचंती हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स पाई, फर्टिलाइजर पाई, किंतु बार्गेन करि पारुनांती निजर प्राइस पाई जोरा को अधिका सन पाई परिबे. हायर द सप्लाई लोअर द डिमांड आ सेथि पाई का डिस्ट्रेस सेल करंती. मु जानि छि बरगड एरिया रो की अछंती वर्तमान हमर एठी बरगड रो की अछंती बरगड साइड रो बरगड साइड रे हमर बहुत टमाटर हुए गोटे सीजन रे आउ मोर मन अछि 2 वर्ष तळे एते टमाटर सेतळ को हेला जे से माने डिस्ट्रेस सेल करिया कर टंका रे टमाटर मिलला मार्केट रे 2 टंका 3 टंका रे टमाटर मिलला से माने क्विंटल क्विंटल टमाटो सेमिति बिक्री कर देले एकदम कम पैसा रे केना इत्ते बम्पर क्रॉप प्रोडक्शन हेतला बम्पर प्रोडक्शन कहंती बम्पर क्रॉप तापर लास्ट रे कोन हला तापर बिकी पालेनी खाली फोपाड़ देले केना टमाटर टा रहिबोनी ना बेसी दिन सड़ी जीवो सो दे जस्ट थ्रू इट. सो सेथरे कोन हला डिस्ट्रेस सेल करंती जतलो को होय तो तांकर खर्च बहुत हेतिबो तादरे किंतु सेति के पैसा भी सेने पाइले नाही. So therefore there can be no food security without security of small farmers. जे पर्यंतो आमे हमर छोटो चासी मानन को सिक्योरिटी देई पारिनु से पर्यंतो हमर फूड सिक्योरिटी आमे केबे भी इंडिया रे पाई परिबा नाही. आमे लास्ट स्लाइड आड को आसलुनी impact of globalization on agriculture. In the 19th century when European traders came to India, Indian spices were exported to different countries of the world. तो हमर जो स्पाइस थिला मसाला बहुत एक्सपोर्ट होतला. इवन टुडे इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट आइटम्स फ्रॉम इंडिया. सो फार्मर्स माने से समय बहुत ताकू करथले बट ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड कॉटन बेल्ट्स ऑफ इंडिया अट्रैक्टेड द ब्रिटिश एंड इवेंचुअली कॉटन वाज एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन एज अ रॉ मटेरियल फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. ब्रिटिशर्स जतरा आसले सेमान देखिले जे कॉटन टा एटी बहुत भलो होची सेमाने ताकू बेसी एनकरेज करिया को आरंभ कले. The Champaran movement started in 1917 in Bihar because the farmers of that region were forced to grow indigo for British textile industries. Under globalization, particularly after 1990, Indian farmers have been exposed to new challenges. Despite India being an important producer of rice, cotton, rubber, tea, coffee, jute, and spices, our agricultural products are not able to compete with developed countries due to the highly subsidized agriculture in those countries. एबे बुझी पालो आमे काहे की एग्रीकल्चर स्ट्रगल करछु बिकॉज़ जदियो आमे इंपोर्ट करछु सॉरी आमे एक्सपोर्ट करछु राइस कॉटन रबर टी कॉफी जूट एंड स्पाइसेस किंतु इंटरनेशनल मार्केट रे आमे कंपटीशन करि परनु काहे करि परनु केना तांकर अन्य कंट्री रे agriculture is so subsidized जे से माने हमटू बेटर प्राइसिंग ऑफर करछन किंतु इंडिया रे हमें सेही प्राइस रे बिकी पारु ना काना हमें लॉस रे पड़िया बोली आ सेठी पई का हमें कॉम्पीट करि पारु. So to make agriculture successful and profitable, proper thrust should be given to improvement of the condition of marginal and small farmers. एबे हम कोथली छोटो चासी मान को हमें जदि एनकरेज करिवा ताहले जाय कि हमें हमरो एग्रीकल्चर को आउरी बेटर करि परिबा. द ग्रीन रिवोल्यूशन व्हिच promised much but धीरे धीरे सेटा कमी गला लैंड डिग्रेडेशन हे गला. सो वर्तमान जेनेटिक रिवोल्यूशन और जीन रिवोल्यूशन इज द कीवर्ड.
which includes genetic engineering. Genetic engineering कौन हबो तमर agriculture production बहुत बढ़ियो आमे sustainable development माने growth करि परिबा agriculture रे हमरो seeds गुडा बहुत भलो quality रे use करि परिबा better production हबो land को आमे रखि परिबा ताको protect करि परिबा आ organic farming आजिकली समस्त practice करियो चेष्टा करछन्ती काहे कि ना जो chemicals use होची fertilizers and pesticides रे which is not good for the environment and not good for our health. किंतु आमर जदि आमे जो फूड आमे ग्रो करूछु आम फार्मर्स मान को द्वारा जदि से मानकर जमी छोट हे चली जाए ताहले हमर पॉपुलेशन बढ़ी जीवो जमी कमी कमी चली जीवो ताहले कोन होबो ताहले productivity rate will reduce. Exactly. And तापरे हमर क्रॉपिंग पैटर्न को भी डाइवर्सिफाई करिया को पड़िबो हाई वैल्यू क्रॉप ऊपरे सीरियल्स को छाड़ी करी हाई वैल्यू क्रॉप्स ऊपरे हमको आउरी अधिक ध्यान देबा पड़िबो दिस विल इंक्रीज इनकम्स एंड रिड्यूस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन साइमल्टेनियसली इंडिया's diverse climate can be harnessed to grow a wide range of high value crops हमरो क्लाइमेट एटी एते अलगा माने डाइवर्सिटी अछि जे आमे बहुत आराम रे एटा करि परिबा. And you know, there's a fun fact, a quick fact, organic agriculture will adapt to climate change more quickly. यदि हमें fertilizer less agriculture use करू, organic agriculture climate change को बेसी quickly adopt करि परिबो. So we'll watch a video on technological and institutional reforms. Just 1 minute. Reforms in Indian agriculture. Okay, जदि न सुना जिवो मते कहियो. Reforms in Indian agriculture. In this module, you will learn about the reforms made in the agricultural sector and the effects of globalization of agricultural sector. Since ancient times, agriculture is the primary activity of people living in India. Post-independence, India has progressed considerably in the agricultural sector because of the technological and institutional reforms. Let's look in detail into the technological and institutional reforms made in the agricultural sector. Technological reforms refer to the changes made in the use of technology. Owing to the technological reforms, the agriculture sector in India modernized. Various agricultural tools have been mechanized. The Persian wheel, wooden plow, and bullock carts have been replaced by
the use of tractors, threshers, and monoblock or submersible pumps. 40% of land in India gets water through irrigation facilities. Today, with the use of drip irrigation and sprinklers, less water is used to obtain more production. Farmers today use chemical fertilizers like nitrogen, phosphorus, potassium, diammonium phosphate, DAP, urea, and biofertilizers to yield a good production. The crops are protected from pests by using pesticides, insecticides, and biocontrol. The government gives economic and technical aid to farmers to purchase subsidies. Necessary information on how to use fertilizers and insecticides and the information regarding the agricultural researches is imparted by the government using various media like television, radio, and newspaper. At distinct level, farmers' training centers have been established. To ensure that the farmers get the benefits of the agricultural research, Gram Sevaks have been appointed. Agricultural universities have been established in every state to make the agriculturists and agro-scientists available for the farmers. For example, the Sardar Patel Krishi University, located at Dantewada in the Banaskantha district of Gujarat. Activities of the national institutes such as the Indian Council for Agricultural Research, ICAR, and Development of Agricultural Research and Education, DARE, have resulted in the increase in the farm production. Various institutional reforms have been made by the government in the agriculture sector. Zamindari system was abolished to stop the exploitation of the farmers. Legislative acts like the Land Regulation Act, Land to the Tillers Act, Tenancy Act, and Land Sealing Act have benefited the farmers in different ways. The Bhudan Yagya of Acharya Vinoba Bhave appealed to the landlords to donate a part of their land. Small land holdings were combined for farming to make them economically viable, according to the Consolidation of Land program. The government has established different institutions to assist farmers. These include timely loans with lower interest rates are provided to the farmers by the cooperative banks and cooperative societies. Local marketing yards and go-downs at cooperative and government level for the farmers to get sustainable price for their produce. For example, the Gujarat Cooperative Oilseeds Growers Federation, GrowFed, the Gujarat State Cooperative Marketing Society Limited, Guj Comasol, and National Dairy Development Board, NDDB, buy the farm products from farmers at a sustainable price. Better transportation and communication facilities have been provided by the government. The Agricultural Crop Insurance Plan safeguards the interests of the farmers. The Green Revolution refers to the increase in the production of the food grains as a result of the use of high-yielding variety of seeds and increased use of fertilizers and irrigation. Green Revolution is a result of the technological and institutional reforms. The Green Revolution has both positive and negative effects. Let's look at the positive and negative effects in detail. The Green Revolution has increased the crop production remarkably. Green Revolution has promoted intensive agriculture, more crop yield on the same land, and extensive agriculture, more land under agriculture. India now has a surplus of food grains. The income of the farmers has increased. Employment and national development has also increased. The Green Revolution has negatively affected by polluting the soil by the excessive use of chemical fertilizers and the insecticides. The fertility of soil and the human health is affected by the use of chemicals. However, now with the use of biochemicals, the fertility of the soil is retained.
The production is increased because of the hybrid crops. In India, agriculture plays a very important role in the economy as it accounts to 26% of the national income. Large number of people are employed in the agricultural sector. Nearly 64% of India's population directly depends on agriculture for livelihood. Raw materials for the agro-based industries like the food processing industries, cotton industry, etc. are provided by agriculture sector. Agriculture is an important source of foreign exchange as it plays an important role in the export trade. Animal husbandry along with farming can be practiced to obtain additional income. India is an agrarian country. 64% of the Indian population is engaged in the agricultural activities. Agriculture in India largely depends on the rains. The uncertainty and irregularity of rain causes crop failure, leading to no livelihood for the farmers. This has an adverse effect on the national economy. The burden on farming has reduced with the improved irrigation facilities and the development of industries. Food security refers to the state of having a reliable access to affordable sufficient quantity of food. If the demand for the food grains increases, the country has to import it in abundance, which is hazardous to the political freedom of the country. India has become self-reliant only after the Green Revolution. In 1999-2000, despite of having surplus food grain stock, a large number of people did not get 2 square meals a day, as 26% of the Indian population was below the poverty line. Today, the farmers give less importance to the production of food grains as they largely benefit by cultivating cash crops. Globalization refers to the process by which any organization or country starts operating on an international scale. The policy of globalization has been implemented by the Government of India in the agricultural sector, due to which many changes are noticed in the proportion, types, and form of agriculture. The government has liberalized the import and export trade of agriculture products. Patent for the high-quality agricultural products have to be registered in the name of the country. Use of technology and modern equipments has increased to meet the demands of higher production. Let us now recap all the important points that we have covered in this module on reforms in Indian agriculture. Okay, so did you see the video? Yes, sir. So George Washington, I think we started with him, है ना? हम लोग उन्हीं से start किया था. I would rather be on my farm than be emperor of the world. That's what he says. Okay. So thank you. We have finished this module and we will go into sectors of the Indian economy in our next class. Okay? Thank you, sir. Welcome. Now, what I want actually from all of you is that give me a date on which we'll have our test. A date and time. At which date or time though? Huh? At which chapter? Agriculture के ऊपर. And next week, we will have a test on all the chapters that we have studied so far. ठीक है? उसके लिए मैं टाइम दे रहा हूँ तुम्हें. Next. सर कितना क्लास हो चुका है? अभी हम लोगों ने क्या फिनिश किया? हमने हिस्ट्री में फिनिश किया है यूरोपियन नेशनलिज्म एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, and then in geography we have finished
2 chapters. Resources, and agriculture, and in political science we over power sharing, federalism. Then in economics we have finished development. Yes. Sir, but I joined first time. No problem. Today. No problem. आपको जितना पता है. So can you teach history for first chapter once more? हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का हम लोग आपको एक काम कर सकते हैं. What we can do is we can provide you with the old videos, because हम लोग सारा वीडियो रिकॉर्ड करते हैं. We can provide you with the old videos. Another thing that we can do for you specially, and if anyone else wants, उस पर्टिकुलर चैप्टर का एक स्पेशल सेशन में ले सकता हूँ. I can do that. सर मतलब मुझे पता नहीं था कि कब कब क्लास होता है, इसलिए मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए. मतलब शेड्यूल नहीं है मेरे पास. अच्छा, आपके पास हमारा ऑफिशियल नंबर है? मैं ऑफिशियल नंबर. यस सर. किस अभी कोई मैम ने दिया था नंबर. एक मिनट मैं आपको अभी स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ. यस. 71. एक मिनट. Zero 92 44 637109245. Okay, so let me. Sorry, 553. Just a minute. Let me cross check. Six 92553. Yes. Okay, let me share this number. So which number? ये हमारा ऑफिशियल नंबर है. ठीक है, तो ये आप लोग भी लिख लो कभी. वैसे तो आप लोग तो हमारे ग्रुप में ही हैं, so there's no point. सर ग्रुप में आप मुझे ऐड कर सकते हैं क्या? हम लोग ओनली रजिस्टर्ड स्टूडेंट को ऐड करते हैं. जो आप रजिस्टर कर लो, हम लोग आपको ऐड कर लेंगे. सर वो रजिस्टर मुझे पता नहीं है कैसे. हाँ, इसीलिए आप इस नंबर पे कॉल. एक्चुअली मुझे एक नंबर पे कुछ मैसेज आया था कि ऐसे क्लास होता है तो आप ज्वाइन कीजिए, इसलिए मैंने ज्वाइन किया. ओके, ये वाला जो नंबर है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है? यस सर. हाँ, तो इसको नोट कर लीजिए. 637192553. अभी जैसे क्लास खत्म होता है तो आप कॉल कर सकते हैं, मैम से बात कर लीजिएगा डिटेल. ठीक है. ओके. आपका नंबर भी दे दीजिए, मैं मैम को दे दूंगा. सर 720 532 5032 5032 7205 720 532 5032. ओके, मैं मैम को दे दूंगा. आप मैम से बात कर लीजिएगा, मैम आपको बता देंगे सारा कुछ. ठीक है, सारा स्टेप्स. ओके, सो टेल मी कब हमको करना है एग्रीकल्चर के ऊपर टेस्ट? कब करना है पहले ये बताओ. Sir, next week I am having exam, so I won't be able to give the exam next week. अच्छा, next week Monday को? No sir, upcoming week I am having all the subject exams. That's why agriculture is not in my course, so I will be preparing for other chapters. साइंस के कोर्स में क्या है सर? सोशल साइंस के कोर्स में क्या है? आपका एग्जाम है ना? Yes sir. So what will come in social science in syllabus? In your exam schedule, in your syllabus for the exams, what will come? Which chapter will come? In history, age of industrialization. Okay. In geography, manufacturing industries. In political science, political parties. And in economics, money and credit. So nothing we have studied. अच्छा,
ठीक है, कोई बात नहीं, आप एग्जाम दे दो. विल ट्राई टू गो अ लिटिल फास्ट फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स. विल ट्राई टू टेक मोर क्लासेस एंड बट आई वांट दैट एटलीस्ट जब क्लासेस हो रहे हैं तो एवरीथिंग वी शुड गो इनटू द डिटेल एंड एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए, बिकॉज from December onwards we will do it in a very different way. We will be completely focusing on your exam pattern, कैसे questions आते हैं, उसको कैसे handle करना है, time management कैसे करना है, और उसको answer कैसे लिखना है. All of these things we will focus on. But before that, if your concept is clear, then I think it will help you a lot. Okay? तो अच्छा चलो, शोभिक के लिए बाद में हम कर लेंगे, बट बाकी लोग बताओ कब कर सकते हैं? सर नेक्स्ट वीक सही है, नेक्स्ट मंडे को या फिर ट्यूसडे. ठीक है, सो वी विल डिस्कस विथ आवर स्टूडेंट्स आल्सो एंड उसके बाद विल इन्फॉर्म. ठीक है, ग्रुप में हम बात कर लेंगे कब है एंड आफ्टर दैट विल इन्फॉर्म यू. बट या सो वी विल डिस्कस आफ्टर दैट. तो but I think it's better that you talk to ma'am regarding your registration. ठीक है? Yes sir. Yeah. Okay, Jayashree. Thank you everyone. Yes. Thank you. Thank you sir. Thank you sir. Okay. Bye. Bye sir.